Welcome back. Let's begin the class with some motivation first. Happy learning! First piece of tape. A very good morning to all of you. We are back to our EVS class. This is for 5th class environmental studies. The name of our book is A Happy World by Ratna Sagar. In the previous class, we have already done chapter 1, 2 and 3. In today's class, we are going to do chapter 6. Please note that we are skipping chapter 4 and 5 for this month. Why? Because in your syllabus for April and May, you are having chapter 1, 2, 3 and 6. And we have chapter 4 and 5 for the next month. So, now we are going to continue with our EVS class with chapter 6. Now let's start. Chapter 6, Growing Plants. Now, what we are going to learn in this chapter? We are going to learn a lot about plants in this chapter. We are going to learn how plants reproduce, what is the structure of a seed, how the seeds move from one place to another, how the plants grow, how do they germinate, etc. So, let me ask you a question first. Have you ever wondered that how do farmers grow crops? How these crops are grown? We have few seeds and how a whole plant is made up out of it. Like how wheat and rice are grown, how all the fruits and vegetables that you eat, how are they grown? How do they multiply? First, we have the process of reproduction. What is reproduction? We'll do the definition in a while. First, let's focus on the word reproduction. What does the word mean? As you can see, it is a combination of two words, re and production, right? Re and production. So, what does that mean? Production means to produce something, to make something. Production का मतलब होता है किसी चीज़ को produce करना या फिर किसी चीज़ को बनाना. And re मतलब दोबारा से. तो reproduction का मतलब क्या हुआ? To remake something, किसी चीज़ को दोबारा बनाना. That is reproduction. Now, what will be the proper definition of this? The process of producing young ones of same kind is called reproduction. अब इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाती हूँ आपको. एक प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी सेम काइंड के यंग वंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यंग वंस बना रहे हैं, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. यंग वंस क्या हुए यहाँ पर? What are the young ones of dogs called? Puppies. And of cats? Kittens, right? तो किसी भी सेम काइंड के मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, बर्ड, रेप्टाइल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यंग वंस बनाना, उसके बेबीज बनाना,
That process is called reproduction. Now, why is reproduction done? All living things need to reproduce so that their own kind does not die out. रिप्रोडक्शन क्यों होती है? सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो ओन काइंड है वो एक्सटिंक्ट ना हो, completely die out ना हो. So now we are going to look at different ways from which plants reproduce. There are many ways through which they reproduce. First is seeds. बहुत सारे plants होते हैं that have seeds. And then that seed is taken, it is sown in the soil and a new plant is grown from that seed. Secondly, we have spores. What are spores? There are many plants that don't have seeds. सारे plants के अंदर fruits तो नहीं आते ना, so उन plants के अंदर होते हैं spores and those plants reproduce through spores. For example, mushroom. आप सबने mushroom देखा होगा. Mushroom is a whole plant. उसके अंदर कोई fruit नहीं होता, उसके अंदर कोई seed नहीं होती है. So how does it reproduce? हम soil के अंदर क्या sow करेंगे? We don't have any seed. So how do mushrooms reproduce? They reproduce through spores. We will do it in detail in a while. Then different body parts. There are many plants that reproduce through body parts as well. For example, potato. पोटैटो के अंदर अगर आपने पोटैटो कभी देखा है तो आपने कभी काट के देखा है तो यू माइट हैव सीन दैट देयर इज नो सीड. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट लेमन और मैंगो, जब हम लेमन और मैंगो काटते हैं देन वी फाइंड द सीड इन इट, राइट? बट व्हाट अबाउट पोटैटो? व्हेन वी स्लाइस अप अ पोटैटो, डू वी सी अ सीड? No, right? Then how does a potato reproduce? A potato reproduces through its body parts. We are going to do it in details now. So let's talk about the plants that have seeds. How do these plants reproduce? So seeds हमारे को कहाँ मिलती हैं? प्लांट के किस बॉडी पार्ट में सीड्स होती हैं? Now, how do plants produce from seeds? Seeds कहाँ होती हैं? अगर हम मैंगो की बात करें तो सीड आपको कहाँ मिलती है? मैंगो के फ्रूट में, राइट? मैंगो में आपको सीड मिलती है एंड वो फ्रूट कहाँ होता है? ऑन द प्लांट. We will take that seed, then what will happen? We will sow it in the soil and after a while we can grow our whole new mango tree, right? Similarly, that's how reproduction through seeds happen. Many plants have flowers. These flowers develop into fruits and these fruits have seeds. Now the same seed will be used to grow more plants. When the seed is sown into the soil and more plants will grow. राइट? अगर मैं आपको दोबारा से ठीक से समझाती हूँ, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं दैट हैव फ्लावर्स. नाउ दीज फ्लावर्स आफ्टर अ वाइल ये फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू अ फ्रूट. एंड देन फ्रूट के अंदर क्या होती है? जैसे हमने मैंगो का एग्जांपल लिया, मैंगो के अंदर क्या होती है? सीड. नाउ वी विल take that seed and we can grow more plants from that seed. We will take the seed of the mango and sow it into the soil and we will take care of it अच्छे से and after a few months we will have our own mango tree, right? So that's how plants reproduce from seed. Now let me tell you a very nice trick to learn the answers. You have hold this paragraph. Now when you are learning, please remember that you don't have to rote memorize this whole paragraph.
each and every paragraph, each and every answer will have some few main points that you are always supposed to mention. Now just learn those main points and you are good to go. अब इस आंसर को हम कैसे याद करेंगे? आप हिंदी में याद करेंगे इसे कैसे? प्लांट्स हैव फ्लावर्स. फ्लावर्स आपको पता है सब प्लांट्स के अंदर, मोस्टली प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स किस में चेंज होते हैं? फ्रूट्स इनटू सीड्स. दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न. प्लांट्स हैव फ्लावर्स इनटू फ्रूट्स इनटू सीड्स. दैट्स इट. आप अपने माइंड में सिर्फ क्या याद करेंगे? प्लांट्स हैव फ्लावर्स. फ्लावर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट में. और फ्रूट किस में कन्वर्ट होता है? सीड में. नाउ दिस सीड इज यूज्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स. टेक द एग्जाम्पल. while you are learning, be your own teacher and explain it to yourself. कैसे मैंगो की सीड से आप मैंगो ग्रो करेंगे. सो डोंट बी सो burdened up while learning this. आपको एक एक वर्ड इसमें याद नहीं करना है. आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश on your own. The main point, the main idea here to learn is flower changes into fruit, fruit into seed. Flower 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 into fruit, fruit into seed. And then that seed is used to grow more plants. Okay, so let's continue. These are a few examples of plants that reproduce through seeds. Mango, rice and wheat. Now brainstorm your mind and think of a few more plants that have seeds and they reproduce through seeds. कितने fruits आप खाते हो जिनके अंदर seeds होती है, right? तो थोड़ा माइंड को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे अब आप. How do plants reproduce from spores? जैसे कि मैंने आपको बोला, there are so many plants that don't have fruits. They don't have seed. So how do these plants reproduce? मैंने एग्जाम्पल आपको बताया like mushroom. Mushroom तो पूरा प्लांट है. It has no seeds. तो हम सोइल के अंदर क्या सो करेंगे जिससे प्लांट ग्रो हो? कुछ भी नहीं. Why? Because mushroom reproduces through spores. Let's see how. Many plants don't have flowers and seeds. They reproduce through spores. Example, fern and moss. बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके पास ना तो फ्लावर्स होते हैं ना ही सीड्स होते हैं. So these plants reproduce from spores. For example, fern and moss and also mushroom.
Now the question arises, what are spores? Let's read it out over here. Spore is a tiny single cell that helps in plant reproduction. बहुत छोटा प्लांट्स के अंदर एक सिंगल सेल होता है, एक छोटा सा सेल होता है. हम जो टेलीविज़न रिमोट में लगाते हैं वो वाला सेल नहीं, एक छोटा सा पार्ट होता है, ऑलमोस्ट एक पेंसिल टिप के मार्क जितना. एंड दैट सेल हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. We'll see a YouTube video about that later. Next topic, how do plants reproduce from body parts? Now that sounds strange, right? Body parts to say, how can a plant reproduce? From its roots or stems, those are the body parts we are talking about. उससे भी plants reproduce करते हैं. मतलब a new plant can grow from the roots of a plant or the stem, even the leaves of a plant. We will learn about these plants now. Some plants reproduce from body parts. कौन से body parts की बात हो रही है? Roots, leaves, stems. This reproduction is called vegetation propagation. कितना अच्छा राइमिंग साउंड कर रहा है ना, वेजिटेशन प्रोपगेशन. ओके, तो अब हम पहले समझते हैं इसे. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते, दे डोंट हैव सीड्स, सो एंड दे इवन डोंट हैव स्पोर्स एज वेल. सो सच प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू बॉडी पार्ट्स. रूट्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके रूट्स में से नया प्लांट ग्रो हो जाता है, उनकी लीव्स में से नया प्लांट ग्रो हो जाता है, उनकी स्टेम्स में से भी. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस इन विच अ प्लांट reproduces from body part of a plant. This process is called vegetation propagation. Vegetation propagation. So this is definition of your vegetation propagation, and also how body parts say how do plants reproduce. That new plant is grown from their either roots or from their stem or from their leaves. Why? Because these plants neither they have seeds nor they have spores, so they reproduce through body parts. और इस process को कौन सा process? A process in which plants reproduce from body parts. This process is called vegetation propagation. Say after me, vegetation propagation. Now this is the question for your above paragraph. इस पैराग्राफ के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है. Define vegetation propagation. Please remember, whenever I am writing question for above paragraph, इसका आपको आंसर नहीं लिखना, क्योंकि इसका आंसर आपको ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है. ये मैं क्वेश्चन फॉर अबव पैराग्राफ किस लिए लिखती हूँ? बिकॉज सेम पैराग्राफ में से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? जैसे कि हमारा यहाँ पर हेडिंग तो थी हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, बट इसके अंदर वेजिटेशन प्रोपगेशन की भी डेफिनेशन दे रखी है. तो इसके लिए सिर्फ ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ऑलरेडी दे रखा है. आपको इसका आंसर दोबारा नहीं लिखना, बस जब आप याद करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि
Now we are going to look at a few examples of vegetation propagation, or we can also say examples of plant reproduction from different body parts. So plants in body parts से reproduce कर सकते हैं, मतलब इन parts से नए plants grow हो सकते हैं. For example, roots, leaf and stem. अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल फॉर रूट्स इज स्वीट पोटैटो. मतलब व्हेन वी हैव अ स्वीट पोटैटो और इवन अ पोटैटो, वी कैन reproduce it. We can grow our own sweet potato or potato using the root of the plant. Do you know that sweet potato and potato are itself the roots of the plant? अगर आपने कभी पोटैटो देखा होगा, आलू देखा होगा, उस पर कितनी मिट्टी लगी होती है ना. Why? Because it grows inside the soil. Why it grows? Which body part of a plant grows inside the soil? The root, right? So पोटैटो प्लांट के रूट्स होते हैं पोटैटोस, एंड वी ईट दैट. और उसी पोटैटो या स्वीट पोटैटो को यूज करके हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. सेकेंड वी हैव लीफ. फ्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स. फॉर एग्जाम्पल, ब्रायोफिलम. Please listen to the pronunciation. Bryophyllum. Bryophyllum. Next we have, there are some plants that reproduce through their stem. मतलब अगर उनकी stem को हम soil में sow कर देंगे, then a new plant will grow. An example is rose and money plant. How often do you buy rose and money plant from a gardener? We don't need to buy a new plant of rose or money plant, because we can grow it on our own. If you already have a rose or a money plant, then we can use the stem of that plant to grow another plant, to reproduce another rose plant or another money plant. So these are a few examples of vegetation propagation. We are going to do about bryophyllum in detail. How does bryophyllum grow? The bryophyllum plant grows from the edge of the leaves of the mother plant. The baby plant falls off from the mother leaf. It then grows independently. Here is a picture of the plant. If you can see, then you will notice over here that this is the leaf. और लीफ के आस पास छोटे छोटे और प्लांट्स आ रहे हैं, राइट. छोटे छोटे लीव्स दिख रही हैं. So this is our mother plant, mommy plant, just saying. Then इस bryophyllum की प्लांट की एजेस इज द कॉर्नर्स. इस लीफ, जो मदर प्लांट है, उसकी लीफ के कॉर्नर्स में यंग वंस ग्रो करते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर अ वाइल दे शेड ऑफ, वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं फ्रॉम द मदर लीफ, एंड देन दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. लीफ के कॉर्नर्स पे यंग वंस अपने आप ही ग्रो कर गए हैं. फिर थोड़े टाइम बाद वो नीचे गिर जाएंगे, सॉइल पर आ जाएंगे, फिर उनकी रूट्स ग्रो करेंगी, एंड दैट्स हाउ we will get a whole new plant of bryophyllum. Okay,
we have plants of rose and money plant. We can cut the stem and use it to get a whole new rose plant. So that's how some plants reproduce through their body parts. Normally reproduce through seed. Place the pieces on the cotton bed. Pour some water on them. Let it remain for some days. You see the growth of buds in the pieces where there were buds. But the plain pieces have not developed any of these structures. If we plant these buds in the soil, a potato plant So this is a node, make a cut just below it at 45 degrees, like this. With the help of knife or any yarning tool, you can just sketch a little at the base, like this. This will help to increase the area from which your roots will be produced and dip it in the rooting hormone. Remove the excess rooting hormone. Instead of rooting hormone, you can use honey or cinnamon powder. Push the media gently up against the stem to provide support. Process each cutting to the cuttings. Reproduction in plants. Like animals and human beings, plants also reproduce to ensure the continuation of the species. They reproduce in many ways. Most of the plants grow from their seeds. There are some plants that reproduce from different parts like the roots, stems, or leaves. These plants are able to grow without seeds. The process by which the different parts of a plant grow into a new plant is called vegetative reproduction. Reproduction through stems. Have you observed a potato carefully? It has some small black dots on it called eyes. When an eye, also called bud, is planted, it grows into a new plant. These stems store food in them and grow into new plants through their buds. Each bud grows as a new plant. Some new plants can also grow from pieces of the stem because they have buds on them. These pieces of stem are called stem cuttings. Many plants like sugarcane, rose, hibiscus, etc. grow from stem cuttings. Some plants like the bryophyllum have fleshy and thick leaves bearing buds on its edges. These buds on the edges of the leaves grow as new plants. When leaves fall down on the ground, the buds start growing. Activity of plants like sweet potato grow as new plants. Activity. Take a sweet potato and support it in a bottle containing water using toothpicks. You will find that after a few days, a new plant grows in the bottle. Reproduction from seeds. We eat fruits. Some fruits have many seeds. Some fruits have only one seed and some have no seed at all.